x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. What was the last I did yesterday? 7th? 8th. Find the value of y for which the distance between p 2 comma minus 3 and q 10 comma y is 10 units. Distance is 10 units. Okay? Distance is 10 units. What is the distance formula? PQ is x1. Every time I have done so many questions since yesterday, but I have never forgotten to write this, that this is the distance between the 2 points. And it has to be mentioned every time. Every time. Right? What is x1? You can take 2 minus 10 or 10 minus 2 as you feel good. Now let me share something here very important. If I write 2 minus 10, it would be something like this. Correct? It would be minus 8, and what would be square of minus 8? 16. If I take this x2 minus x1, I told you both the ways are equally correct. You don't have to bother much about it. 10 minus 2 would be 8. What would be 8 square? 64. No problem. But for the next ordinates, if I write this, you will have 2 minus sign. Here you students make so many errors of opening it. But if I write it opposite, y2 minus y1, y2 minus y1, right? y2 minus y1, what it would be? Correct? It is so easy to open. दोनों बीच वालों को तो you can merge together, but the ones which are separately written, you can't merge them. इधर क्या होता है, आपको खोलने में a माइनस बी होल स्क्वायर, इसके साथ भी माइनस, गलतियां होंगी. कुछ कोई लिखता है ऐसे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रही हूँ, ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो गलत है ना, क्योंकि 2ab, इसको कैसे खोलना चाहिए, इसमें लेना चाहिए माइनस कॉमन. जब माइनस कॉमन आ गया, माइनस का स्क्वायर क्या आ गया, प्लस 3 प्लस वाई होल स्क्वायर. तो इसको अवॉइड करने के लिए दो माइनस ना आए, आप उल्टा लिख दो. आप लिखो ही मत, यही जिससे आपको पता चल रहा है कि मेरे एरर होगा. तो यू राइट लाइक दिस, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड दीज टू साइन वुड बी मर्ज्ड. दो माइनस मत लिखिए. हाँ, अगर दो नंबर्स हैं, इफ यू राइट 2 माइनस, नो प्रॉब्लम. माइनस माइनस प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. माइनस का स्क्वायर आप, नॉट अ बिग डील. बट व्हेन वन इज अननोन and one is known and you are creating 2 minus sign, या तो उसको ढंग से खोलिए. What do you mean by ढंग से खोलिए? ढंग से खोलने का मतलब है माइनस कॉमन लीजिए, y plus 3, take out minus sign common, square of minus would be what? Plus. So what it would be? Am I clear? ठीक है. Two minus 10 is what? Minus 8. Minus minus plus 5 plus 3 whole square. And this distance is not to be evaluated or calculated. It is given. How much is the distance given? 10 units. Distance कितना दिया हुआ है? 10 units. 10 is equal to square of minus 8 is 16. सांची कैलकुलेशंस को ध्यान से देखो. फॉर्मूला में तो कुछ भी नहीं है. क्या लाइन एक ही लाइन है, 3 दिन से वही कर रहे हैं. सिंस डे बिफोर यस्टरडे वी आर लर्निंग दिस ओनली. बट व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड टू डू द कैलकुलेशंस करेक्टली. माइनस 8 इज स्क्वायर इज 64, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a. नाउ व्हाट यू विल राइट हियर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100. एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा. स्क्वायर रूट का रूट स्क्वायर करते हैं तो रूट रिमूव हो जाएगा. 0 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27. What are the
2 parts. 27 के क्या हुआ? 9 and 3. 9 3s are 27 and 9 minus 3 is what? 6. So what do you get here? Y square plus 6y minus 27 is equal to 0. 6y would be open as 9y minus 3y minus 27 is equal to 0. Y plus 9 minus 3 y plus 9 is equal to 0. This is the grouping done. Y plus 9 y minus 3 is equal to 0. Y is equal to minus 9 plus 9 will go ahead and become minus 9 and minus 3 will go ahead and become 3. So what are the two values of y you are getting? You don't have to ignore any value. Y minus 9 भी हो सकता है. आ जाइए जी, जाग जाइए. Y minus 9 भी हो सकता है और y 3 भी हो सकता है. Right? So यही पूछा था, what are the values of y for which the distance between PQ is 10 units. तो PQ का लगाया x1 minus x2 whole square, y1 minus y2 whole square. उसको ओपन किया, राइट लेफ्ट साइड पे 10 लिख दिया. स्क्वायर रूट हटाने का क्या तरीका होता है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. 10 का स्क्वायर हो गया 100, वहाँ रूट रिमूव हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. एंड आफ्टर यू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू जस्ट हैव टू स्प्लिट इट. राइट? नाउ दिस वाज 8th sum. 9th, if Q01 is equidistant, it is equidistant from P 5 minus 3 and R x6. Find the values of x. Find the values of x. Also find QR and PR. Also find QR and PR. This is Q01. Equidistance means it is at equal distance. From which point? P and R. Equidistant का आप चार्ट ऐसे बनाते हैं. P and R. What is P? 5 minus 3 and what is R? X comma 6. Equidistant means Q is equidistant from P and R. So QP is equal to QR. Q is equidistant from P and R. So QP. अगर वो बोलते हैं P is equidistant from Q and R, तो PQ is equal to PR. R is equidistant from P and Q. So RQ is equal to R. RQ is equal to R. Now Q is equidistant, so QP जो equidistant होगा उसका दोनों का distance QP is equal to. ये कनिष्क बोलेगा QP distance कैसे निकलेगा कनिष्क? QP बोलो QP फटाफट. बोलिए. Yes, 0. Speak all together. 0 plus 5. ना माइनस प्लस नहीं माइनस. x1 माइनस x 0 माइनस 5 होल स्क्वायर. अगर कोई इसको x1 ले रहा है तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर. उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज स्क्वायर ही है, उसको पॉजिटिव ही करते हैं. यू कैन राइट 5 माइनस 0 होल स्क्वायर और यू कैन राइट 0 माइनस 5 होल स्क्वायर. देन नेक्स्ट वन वुड बी प्लस. अब बीच में क्या होता है? ये है, ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं. अरे भाई आई टोल्ड यू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1. व्हाट इज y1 माइनस y2 होल स्क्वायर? 1 minus 3 whole square. What about this? 0 minus x whole square. 1 minus 6 whole square. What is minus 5 square? 25. Minus minus plus. What is 1 plus 3? 4. 4 square is what? 16. Minus x square is x square. 1 minus 6 is minus 5. Minus 5 square is 25. बोलो. Correct? Now this is what? Root 41. X square plus 25. Squaring both the sides. 41 is equal to x square plus 25. 41 minus 25 is equal to x square. X square is equal to 16. X is plus. Don't ignore minus 4. Don't write x is equal to 4. You will lose your marks if you use only x is equal to 4. X square is equal to 16 means x is equal to plus minus 4. Find x. What is the next part they are asking? Find PR and QR.
QR and PR. QR, PR. देखिए QR is what? x1. QR का डिस्टेंस बताइए क्या है? 0 minus x square, 1 minus 6 square. Now you don't have one value of x, you have two values of x. Use बोलिए x की वैल्यू क्या है? माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस. So x square plus minus 5 square is what? 25. If I write x as plus minus 4, स्क्वायर ही होना है. प्लस का 4 भी 16, प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 और माइनस 4 का स्क्वायर भी hardly matters. Even if it doesn't matter, you are getting the same answer. That does not mean that you will not use minus. You will write also कि अगर x square equal to 4 ही लिख दो, x point है, x is a abscissa. Abscissa positive भी हो सकता है और abscissa negative भी हो सकता है. तो फिर आपको दोनों लेने हैं. हाँ, वो अलग बात है कि स्क्वायर होने के बाद after becoming square, it becomes positive only. Plus 4 का square is also 16, minus 4 का square is also 16. What is the answer? And don't forget to write the word units. Correct? Am I clear? Next, what is PR? What is PR? बोलिए PR क्या होगा? 5 minus x whole square. 5 minus x या x minus 5 क्या बेटर रहेगा? दूसरे में देखो -3 -6 लगाओगे. 5 minus x plus -3 minus 6. 5 minus x whole square. What is minus 9 square? 81. अब यहाँ पर +4 और -4 लगाने से फर्क पड़ेगा. दोनों अलग अलग आंसर आएंगे. If I put +4, it would be 5 minus 4. But if I put -4, it will become 5 plus 4. Isn't it? यहाँ तो सेम, यहाँ तो सिंगल 4 था, यहाँ 4 बीच में आ रहा है, 5 के साथ अटैच था. दोनों अलग अलग बातें हैं. Start absolute maximum. Not the boards, all the three boards. 5. एक बार x को अब इधर दो पार्ट्स हो गए. वन में you will use x is equal to 4, अदर में you will use x is equal to minus. Are you getting what I mean to say? You will use x is equal to 4 and x is equal to minus 4. 5 minus 4 whole square plus 81 for this, and for this 5 minus 4 square plus 81. This is what? What is 5 minus 4? 1. What is 1 square? 1. 1 plus 81 is what? Root 82 units. This will become 5 plus 4, 9 square plus 81, which is 81 plus 81, which is 162. 162 is 81 into 2, which is 9 root 2 units. Correct? Here you will have two values of PR. One is root 82, another is 9 root 2. दोनों लिखनी है क्योंकि +4 यूज करने से डिफरेंट आ रही है और -4 यूज करने से डिफरेंट आ रही है. Find the relation between x and y. Relation between x and y such that this point pxy is equidistant from 3, 6 and -3, 4. 3, 6 and -3, 4. Breathing absolute easy to learn. Absolute maximum like points. So these are equidistant. PQ is equal to PR. These 2 points are equidistant. So you will write PQ is equal to PR. What is PQ? X minus 3 whole square, y minus 6 whole square, x minus -3 whole square and y minus 4 whole square. Correct? What will become here? A minus b whole square. बोलिए सब. आपको मैं बताऊं, रूट को ज्यादा देर तक मत कैरी कीजिए. यू राइट हियर ओनली स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. व्हाई टू टेक इट फर्दर? इतने स्टेप्स जगह भी है नहीं. रूट हट जाएगा. a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. 2 into y into 6. How about this? What will this become? प्लस बन जाएगा. x प्लस 3 क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a. a माइनस बी होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45.
x square plus y square plus 6x minus 80y plus 25. Correct? X square plus y square. Take this to other side. Minus x square minus y square. 6x minus 8y plus 25. Minus 6x यहाँ पे क्या हो जाएगा? Plus 6x. Minus 12y will come here and become plus 12y. And plus 45 will become here minus 1. What is it? 0. 6x plus 6x is 12x. 6x plus 6x is 12x. Minus 8y plus 12y is plus 4y. 25 minus 45 is minus 2. 25 minus 45 is what? Minus 20. Take minus 20 to the other side. 20. 12x plus 4y. What is it all? 20. इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन. 4 3x plus 1. जो 4 यहाँ मल्टीप्लाइड है इधर आके क्या होगा? डिवाइड. 3x plus y. क्या आएगा? 3x plus y. What is the relation? Relation means the equation. Obviously. पॉइंट तो आ नहीं सकता बिकॉज बोथ आर अननोन. अगर यही पॉइंट होता x एक्सिस पे तो क्या लिखा जाता? x0. यही पॉइंट होता y एक्सिस पे तो क्या लिखा जाता? 0y. इससे पॉइंट्स आ जाते. But now that both are unknown, axis and ordinate both are unknown, you will never get a point. You will get an equation which you will call it as a relation. Am I clear? Hurry up.